Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurбхавah Tatsavitravarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Last week we started a new little book which is written by Guruji, Veda Vivechana. And let's open the book if you have it. We are on page number 19, mantra number 6. And this is from Rig Veda by Rishi Gritsamad, and Chand is Trishtopa. Purva Kathan means before we read the mantra, at least some kind of an idea what this mantra is about. So Guruji says, Jal ऊर्जा का महान स्रोत है. उससे जहां घराट चलते हैं वहां उससे विद्युत भी प्राप्त होती है. And we are all familiar with that. Okay. Swa adame sududha yasya dhenuhu swadham pipaye subhanmati so apa excuse me so apamna padur jayan savantah vasudevaye vidhate vibhati. दमे means घर में, सु दुधा दूध देने वाली, तो गाय. अपाम नपात ऊंचाई से गिरता हुआ जल. सवधाम सुंदर जल को. अन्नम अन्न. अति खाता है. वसु धन. दे आए देने के लिए. अविभाति ही शोभायमान होता है. So these are the meanings of some of the words in this mantra. अपाम नपात जल से अर्थात ऊंचाई से गिरते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न होती है. घर में जिस जल को पीकर गौ दूध देती है और जिस द्वारा हमें खाने के लिए अन्न मिलता है और कई प्रकार के अन्य पदार्थ भी जिस कारण से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें देने से मनुष्य शोभायमान होता है. Okay. So in these mantras we are learning the importance of these 5 elements. That's why these elements are called devatas. देने वाले हैं देवता. So this mantra is about jal. जल देवता. ओके. जीवन का आधार जल. जल से जीवन होए. करें न दूषित जल कभी. विशेष देव ही सोए. उसके ही तो आश्रित जीवन है इस लोक. जल बिना जो लोक हैं खाली वे परलोक. जल को माने देवता सनातन में सब लोक. जल को करना दूषित कहें पाप सब लोक. होए न पशुधन जल बिना. धन धान्य भी न होए. घराट चले नहीं जल बिना. विद्युत जल से होए. वेदों में जल देव कहाई. जल से पूजा होती आई. आज हम ना बात पहचाने. जल को एक पदार्थ माने. So when we don't consider Jal as Devata, we don't mind polluting it. We throw all kinds of toxic elements into it. Or even waste it. Wasting Jal is also a papa. Okay? We see that the tap is open and we are talking and water is just going wasted. That's a papa. Okay? So let's look at the English translation of this by Vatika. Okay. The forethought, water is a great source of energy. It runs water mills and produces electricity as well.
Purport: water produces energy when it is made to fall from a height. At homes, the water that cows drink and yield milk, by which we get food grains to eat, and due to which many other things also grow, by donating that man attains grace. Water is the basis of life. Life would end without water. Know it, the special God. Never pollute it, brother. The world flourishes by water. By this the life exists. Some worlds exist sans water, but like lifeless deserts. Water was reckoned God. People in the past did revere. It is a sin to pollute water. Heed wisdom of the Vedic seers. No livestock without water, nor any wells there would be. Water mills would not run, nor there would be electricity. The Vedas call water the god. Water they were worshipping. It is contaminated today, considered a common thing. Yeah, when we do yagya, the havana, there are some mantras we recite where we take the water in our hand and we are being thankful to God for this amrit. So water is called amrit also. Yeah. Let's look at verse number 7. This is also from Rig Veda. ऋषि आंगिरस छंद जगते। पांचों तत्वों में निहित महान शक्ति है। So that means all these 5 elements, there's a great power in them, जिसका परिचय अधोलिखित वेद मंत्र इस प्रकार देता है। न यस्य ध्यावा पृथ्वी अनुवह्यजो न सिंधवो रजसो अंतमानशुः नोत स्ववृष्टिम मदे अस्य युध्यत एको अन्यच कृषे विश्व विश्वम अनुशक। व्यच, व्यच मीन्स धोखा देना, ठगना। रजस धूल, रेणु पृथ्वी। आनशु खींचना, श्वास लेना। एक दूसरे तत्व ने सारे संसार को अपने आकर्षण से सदा से रोका हुआ है। वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर कार्य करते हैं। कोई भी उन्हें धोखे से कुपथ नहीं चला सकता और अपने ऐश्वर्य के मद में आ उन पर प्रभाव नहीं जता सकता। अर्थात पांचों तत्व स्वतंत्र गति से अपना अपना कार्य करने में सक्षम हैं। Okay? So all 5 are needed in this prakriti to run this prakriti. सृष्टि के आधार तो 5 देव ही जान, पृथ्वी भी एक देव है, जीवों का जो स्थान। देवों की है मैत्री, अटल उसे पहचान, विरोध लेश भी है ना, दृढ़ संबंध है जान। See, this is we learn from that panchikaran of these 5 elements in our Vedas. Panchikaran, they just mix together in different proportion to create this beautiful nature. So that's why Guruji said that devon ki hai maitri, atal use pehchan. They don't go against each other. They learn how to live with each other. Virodh lesh bhi hai na, drid sambandh hai jaan. We should learn this also from these devatas. स्वतंत्र सबका कार्य है, स्वतंत्र उनकी चाल, अपना अपना क्षेत्र जो लीन सबन संभाल। मिलकर करते काम है, विरोध लेश ना मीत, इस कारण तो जगत में शांति ले हम चीत। So knowing what we are supposed to do and knowing how to do things together also, this is the skillfulness in working. पांचों देव ही जग आधार, सृष्टि के मानो वे सरदार, उनके बाहर ना कुछ भी भाई,
उनसे व्याप्त सर्व जगताई। The fourth thought, the five elements have got great powers, which are depicted in the following mantra. Meaning, since the time immemorial, these elements are holding the entire universe with their gravitation. They work independently within their own norms. None can deceive or distract them, nor can anyone, in pride of one's power, influence them. In other words, all the five elements are capable of doing their own work independently and at their own pace. Know the five gods, the creation's very basis. See greatness of the earth, countless beings it houses. The gods dwell in friendship that is eternal and strong, having no trace of conflict. Inseparable is the bond. Independently they work. Independent is their speed. Certain on their course, constantly they proceed. In harmony they all work, without any opposition. We find peace in the world, owing to this reason. Five gods are basis of the world, core of the creation they made. Nothing exists beyond them. The entire creation they pervade. Mantra number 8. Again from Rig Veda. ऋषि व शुक्र चांद जगते। देवों की व्यापकता, उनकी शक्ति, उनके गुण तथा उपयोगिता सभी तर्कातीत हैं। स्वर्णम अंतरिक्षानि रोचनः ध्यावा भूमि पृथ्वीम स्कंभुरोजसः पृक्षा इव महयन्तः सुरात्यो देवः स्तवन्ते मनुष्याय सूर्य। रोचना, रोचना मीन्स प्रकाशमान, सकंभु धारण करना, परीक्षा इव महान दानी के समान, सुरात्यः उत्तम धन देने वाले, ओजसा बल से। पांचों तत्वों ने अपने तेज से द्युलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष को रोक रखा है। अंतरिक्ष इन्हीं तत्वों के कारण स्वर्ण के समान सुंदर और प्रकाशमान है। Because when we look up in the sky, how beautiful it looks, so bright. द्यू, पृथ्वी और अंतरिक्ष में पांचों तत्व अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पांचों तत्व महादानी हैं। This is another thing we got to learn from these देवता. That's why they are called देवतास, दानी। वे अपनी अपनी शक्तियों से विश्व को उसी प्रकार समृद्ध बनाते हैं जैसे कोई महान दानी पुरुष दान द्वारा किसी को माला माल कर दे। पांच तत्व जो विश्व के जग के वे आधार, वे हैं वंदे विश्व के बिन उन जग निसार। वंदे, वंदे मीन्स वंदना करने योग्य। द्युलोक में प्रकाश है, अग्नि से ही मीत, पृथ्वी में है रस भरा, जल तत्व से चीत। मिलकर करते काम वे, विरोध लेश ना मीत, इस कारण ही जगत में शांति ले हम चित। अपनी अपनी शक्ति से करें जगत कल्याण, जैसे दानी पुरुष एक दे नित्य ही दान। देते शिक्षा देव हैं भाई, भूला है सब जग समुदाय। कृतज्ञता को हो तुम दिखलाते, हम दानी तुम हमें सताते। कृतज्ञता तो अक्षम्य है दोष, विधना का तुम पे बहु रोष। से कृतज्ञ मीन्स thankless. We become so thankless to these devatas also. We become thankless to
lot of other people also who have done favor to us. अक्षम्य है दोष. अक्षम्य मीन्स जो क्षमा भी नहीं, जिसकी कोई क्षमा भी नहीं हो सकती, कोई प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, if we are thankless. ओके, सो कई दोष होते हैं, उसके लिए क्षमा मांग लो तो क्षमा मिल जाती है, पर कई ऐसे दोष होते हैं क्षमा मांगने से भी नहीं मिल सकते. दिस इज व्हाट गुरु जी सेइंग. कृतज्ञता तो अक्षम्य है दोष, विधना का तुम पे बहु रोष. When we see the tsunami coming, when we see all these wildfires are burning our homes, or when we see the hurricanes and the tornadoes are coming, or this global warming, why is it happening? Because of us. We have polluted every devata. Instead of being thankful, we have gone the other way around. We use and use and use and abuse and abuse and abuse. So this is what Guruji is saying. Kritagna to akshamya hai dosh, vidna ka tum pe bahu rosh. Kyunki who is the owner of these devatas? Who is the master of these devatas? Vidna, Bhagwan. Let's look at the English translation. The fourth thought, the universality of the gods, their power, qualities, and utility are beyond any argument. Meaning, the five gods with their radiance have held the earth, the space, and the celestial worlds intact because of these elements. The sky is brilliant and beautiful like gold. The five gods are displaying their own powers on the earth, ether, and the space. These five elements are great donors. They enrich the entire universe like a greatly generous person prospers others by charity. The great five elements, very basis of the universe, worth worshipping sans them. The world is meaningless, radiance of the sky. Because of fire element, the earth is full of sap. With the water element, together they all work with no conflict at all. So we find peace in the entire universe span. Their powers they use for welfare of the universe, like a generous person by charity who always serves. The gods teaches us all. The entire world is oblivious. Thanklessness you show. We donate and you pollute us. Unforgivable is thanklessness. If we don't mend our ways, it will annoy the Lord of Destiny. Dire consequences we will face. Mantra number 9. From Rig Veda by Rishi Vishwamitra. छंद इज त्रिष्टुप. पृथ्वी केवल एक तत्व ही नहीं, उसके गर्भ में विशाल धन कोश है. इसी कारण उसे वसुधा नाम से पुकारा जाता है. Okay, so whatever we see over here on top of the earth, where did it come from? From the earth. Just look at it. पूर्विरस्य हे निषिधो मृतेषु पुरुवसूनि पृथ्वी विभर्ति इंद्राय ध्याव औषधिरुतापहो रई रक्षन्ति जीर्यो वरानि. पूर्वी अनादिकाल से प्राचीन निषिद्ध तैयार हुए खनिज आदि द्रव्य भूमिगत. पुरुहु बहुत, वसुनी द्रव्य, रई नदी की धारा, जीरिया सूखते हुए, इंद्रियाय ऐश्वर्य के लिए, आपहा
जल। पृथ्वी में विशाल धन कोश है। अनादिकाल से इसके गर्भ में अमूल्य खनिज पदार्थ आदि वस्तुएं पड़ी हैं। इसके तल पर महान ऐश्वर्य का भंडार जल और औषधियों के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी पर नदियों का निरंतर प्रवाह उसके वनों को सदा हरा भरा रखता है। विधाता की विभूति को देखन चाहो मीत, नजर दौड़ाओ भूमि पर, लोगे तुम सब चीत। पृथ्वी के तो गर्भ में अमूल्य निधि लो जान, अनंत पदार्थ हैं छिपे, मानव ले पहचान। भूमि पर हम देख रहे जल अथाह है मीत, समुद्र के जो रूप में ले दृष्टा चित। नदियों का प्रवाह सदा चलता रहता मीत, घने वनों की जानवे समझो ला कर चीत। पृथ्वी की सब करें संभाल, माने माता समहर हाल। प्रदूषित करे न पृथ्वी भाई, प्रदूषित होकर हो दुखदाई। The fourth thought: the earth is not only an element, but it contains vast treasures of wealth also, because of which it is called Vasudha as well. Meaning, the earth contains vast treasures of wealth. It consists of invaluable minerals and all other things since the time immemorial. The vast expanses of water, trees, as well as herbs are available on its surface, and the regularly flowing rivers keep its jungles evergreen. The manifestation of God, if you wish to view, behold the vast landscape, it comes before you. In womb of the earth exist invaluable treasures, infinite things it consists, ever new things man discovers, vast expanses of water, the earth on itself holds, in the form of oceans, everyone here beholds. Rivers full of water always continue to flow, the lifelines of all vegetation, all in the world know. Care treat the earth as mother, revere it dear, be wise, never pollute the earth, it will curse us otherwise. Today's last mantra, mantra number 10, from Rigved Rishi Kanva, and chand is Ushinik. सभी देवता तत्व प्रदूषण रहित हैं. So in their original form, they are not polluted at all. मानव ने उन्हें प्रदूषित किया है. So we are the guilty of it. ते ही पुत्रासो अदिते विदुर्द्वेषासि योत्वेः अहोश्चिद्रु चक्रेहो अनेहसः. अहोचित मीन्स प्रदूषण से दूर करना. द्वेषांसि ही दोषों को, योतवे विदु दूर करते हैं. पुत्रासो ज्ञानवान उजागर. आदिते विमल. द्वेषांसि ही दुष्टों को, हानिकारक तत्वों को. सभी देवता प्रदूषण रहित हैं और वे संसार को प्रदूषण रहित करते हैं. We have some smelling piece of cloth, put it outside, smell will go away. Who cleans it? The warmth and the air. Okay, so they help us. We make it dirty, they help us to keep it clean. So सभी देवता प्रदूषण रहित हैं और वे संसार को प्रदूषण रहित करते हैं. वे सब प्रकार से विमल और उजागर हैं.
वे हानिकारक तत्वों को जानते हैं और उनका नाश भी करते हैं. Okay, with water we wash away all the dirt. With fire also we kill the bacteria. शुद्धि की पराकाष्ठा देवों में लो जान, उनके ही तो कारणे रहता शुद्ध जहान. मानव करत अशुद्ध है, परावर्ण को मीत, उन्हें जात जो शुद्ध हो, देवों द्वारा चीत. किसी तत्व के कारण हो जगत परेशान, अन्य तत्व तब आए कर है करत समाधान. So look at that. How they work for our benefit. देव सभी सजग रहे अपने अपने काम, उन देवों के मध्य में रम रहा है राम. Look at how beautifully the deep message given to us in a very simple language. उन देवों के मध्य में रम रहा है राम. जग में रमता राम रजाई, देव करें सदा सेवकाई, मानव करे न देव को ताई, देव कोप का भय हो भाई. Okay, we got to wake up. Learn from these devatas, live like devatas, do good, remember God. Life becomes beautiful. We enjoy life that way. This is these rishis are telling us. It was true back then, it's true now, and it will be true in the future also. Okay? Language can be changed, but the message gurus give us, keep giving us according to the time. But ultimately, it's our duty. We need to do something, not just only recite the mantras, but learn from the mantras and live a life according to the mantras. Okay, let's look at the English translation also for this one too. The fourth thought, all the gods, the five elements, are pure, free of pollution, but man has heavily polluted them. Meaning, all the gods are free of pollution. They absorb pollution and purify the world as well. They are pure and vital elements by all means. They know the harmful things and destroy them as well. The zenith of purity, behold in the gods dear, because of them alone, the world remains pure. Man is polluting atmosphere, all the barriers are blown. It is purified again by the five gods alone. If the world faces trouble owing to any of the elements, any another element comes in, resolves the problems. The gods remain active in their own work ever. Among these gods dwells the Almighty Lord dear. God dwells in the universe. The gods serve him ever. Man is uncaring to the gods, unmindful of their ire. Thank you very much, Vatika. Let's do the Shanti mantra also. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for coming.